हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में एक बहुत महान शासक सिकंदर महान हो गया है, उसको महान कहते हैं। अकबर महान कहलाया, सिकंदर महान कहलाया, बाकी राजा लोग कहलाए, सम्राट कहलाए। महान 2-3 लोगों के बीच में लगा। और सिकंदर महान पूरा गजनी, पूरा रूस, पूरा यूनान, इन सबको लूटता हुआ और पूरे भारतवर्ष को लूटा। सैकड़ों हाथियों के औदों पर उसने हीरे मोतियों से भरे हुए हाथी गजनी ले गया, अपने देश ले गया। सोने चांदी से भरे हुए 2000 हाथी भर करके सिक्कों से अपने गजनी ले गया। कम से कम 10,000 और तो यहां से उठा करके गजनी ले गया। इसलिए कि वो राजा था, इसलिए कि वो एक आक्रामक था, इसलिए कि यहां के राजा लोग उनका सामना नहीं कर सके, और इसलिए कि उसमें विजय होने की भावना थी, एक लूटने की भावना थी, एक छीनने की भावना थी, अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान बनाने की इच्छा थी। जब उसकी मृत्यु निकट आई, जब उसको एहसास होने लगा कि अब मैं 4-6 घंटे में मर जाऊंगा और मेरी सांस रुकने लगी है, तो उसने अपने सैनिक को, उसने सेनापति को बुलाया, महामंत्री को बुलाया, उसने वैद्य को बुलाया। उसने कहा कि अब मेरी आयु कितनी बाकी है? वैद्य ने कहा महाराज अब आपकी नाड़ी टूटने लगी है, हो सकता है 3-4 घंटे और जीवित रहें, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा महाराज। उसने कहा कि उस सेनापति को कहा कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया है उन हीरों का यहां ढेर लगा दो मेरे सामने, एक बार देख लेना चाहता हूं कि मैंने कितने हीरे एकत्र किए हैं, और उन सोने के सिक्कों का भी ढेर लगा दो, और मेरी जितनी रानियां हैं 10-12 हजार उन सबको यहां एकत्र करके खड़ी कर दो, मैं मरने से पहले उन सबको देख लेना चाहता हूं। हीरों का ढेर लगा दिया, एक तरफ सिक्कों का ढेर लगा दिया, माणिक मोती मूंगे उनका ढेर लगा दिया, 12-13 हजार रानियां थी उनका ढेर खड़े कर दिए, उधर उनके बेटे पोते पोतियां थी वो खड़ी हो गई, और सिकंदर लेटा हुआ अंतिम घड़ियां गिन रहा है। और हीरों के ढेर को देखे तो गर्दन से पीछे मुड़े, इतनी ऊंचाई, इतना ढेर, एक एक हीरा 2-2-2.5 लाख का था। आप कल्पना करें कि उस ढेर का कितना अंत होगा उन धन का। उसने सेल्यूकस को, अपने महामंत्री को पूछा कि ये सब मेरा है? उनका महाराज आपका है, आप ही तो लेके आए, भारतवर्ष को लूट के लाए हैं, रूस को लूट के लाए हैं, जितने देश थे उन सबको लूट के लाए, ये सब आपका है। और ये रानियां, ये सब आपकी महाराज, ये भी सब आपकी। उसने कहा मरने के बाद मेरा क्या होगा? उनका महाराज मरने के बाद कुछ नहीं होता है, एक बांस की 2 खपचियां लाते हैं, उनके ऊपर मूंज बांधते हैं, फिर आपको लिटा दिया जाएगा, और फिर 4 कंधों पर आपको बिठा करके, लिटा करके, और शमशान में ले जाकर जला देंगे। फिर ये सब किसी के साथ गए नहीं महाराज। तो एक काम करना, मेरी अंतिम इच्छा यही है, कोई वसीयतनामे में कुछ लिख के जाता है कि मेरे बेटे को ये दे देना या मेरे पोतों को दे देना या ये, उसने कहा मेरे वसीयतनामे में और कुछ नहीं लिखना है, एक मैं जो कह रहा हूं वो काम करना है। महाराज हुक्म दो, आप जो कहेंगे वही पूरा होगा, आप तो महान हैं, पूरे संसार में महान शब्द आपके पीछे ही लगा है। उनका अर्थी पे बांधते कैसे हैं आदमी को? उनके महाराज इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आदमी को लिटा देते हैं, हाथ और पैर सीधे कर लेते हैं, और उसके ऊपर सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं, कफन, और उसको मुंह से पूरा लपेट देते हैं कि उससे नीचे गिर नहीं जाए मार्ग में, और शमशान में चिता लकड़ियों पर रख करके जला देते हैं। बांधो तो दोनों हाथ नीचे लटका देना, बाकी शरीर को बांध देना कफन से, हाथ नीचे लटके रहने चाहिए। उनके महाराज ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हाथ तो शरीर से चिपक करके फिर इसके ऊपर कफन लगाते हैं और फिर लगाते हैं। ये आप नई बात कह रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? उसने कहा जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए, मेरी आज्ञा, मेरी इच्छा तो ये है कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए। उनका महाराज को कारण तो होगा ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए अर्थी के बाहर? उसने ऐसा कि उन सब लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़ जाए कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली आ जा रहा है, ये मालूम होना चाहिए, बस इसलिए मेरे दोनों हाथ लटके होने चाहिए। अगर सिकंदर महान भी खाली आ चला जाएगा तो गारंटी के साथ आप भी खाली आ चले जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं ले जा सका तो हम भी नहीं ले जा सकेंगे, फिर साथ में ले जाएंगे क्या? जब कुछ नहीं ले जाएंगे तो ये सब शास्त्र झूठे हैं, फिर बेकार है, सब बेकार ही है। ये धर्म अगर बेकार है तो फिर हमारे पास ले जाने के लिए चीज क्या है? क्या ले जाएं, कैसे ले जाएं? न पत्नी साथ जा सकेगी, न पत्नी पुत्र जा सकेगा, न भाई बंधु बांधव कुछ नहीं जा सकेगा, तो फिर साथ में कौन जाएगा? या अकेले ही यात्रा करनी है तो फिर ये तामझाम क्यों करें हम? क्यों इतने आयतोबा करें? 4 लाख को 5 लाख क्यों बनाए हम? जीवन यापन के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर सपूत बेटा होगा तो और कमा करके जिंदगी व्यतीत कर लेगा, और कपूत बेटा होगा तो 5 लाख आपको उड़ा देगा, फिर भी फकीर हो जाएगा। आप उसमें क्या करेंगे? कपूत बेटा तो 1 साल में उड़ा देगा, दूसरे साल खाली हाथ हो जाएगा, और सपूत बेटा होगा तुम्हारे पैसे उसको जरूरत है ही नहीं, वो खुद 5 लाख इकट्ठे कर लेगा।
और सिकंदर महान अगर कह रहा है तो सिकंदर महान ने एक ही बात कही, आप यूनान का इतिहास पढ़ें। उसने कहा कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, रास्ता बता सके जिस रास्ते पर चल करके मैं प्रभु में लीन हो सकता है, उस आनंद को प्राप्त कर सकता जो आनंद आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। जो आम आदमी जिस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो पूर्णता अगर मैं प्राप्त कर सकता तो आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ जाता। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती, आज मेरे होठों पर हंसी होती, आज मेरे आंखों में आंसू हैं, आज मेरे हृदय में पश्चाताप है कि ये मैंने एकत्र किया, एकत्र करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। और सिकंदर तो चला गया, मगर एक इतिहास लिख के चला गया, एक विचार लिख के चला गया कि हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भजन गाने से और मंदिर में जाने से और हाथ जोड़ने से और आंखें बंद करके बैठने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यह केवल ढोंग है, यह केवल पाखंड है। हम अपने आप को समझाने की एक प्रक्रिया है कि मंदिर में गए, मंदिर में जाए, आपको मानस में वो घूम रहा है कि उनसे 400 रुपए वापिस वसूल करने हैं, तो इधर से होते हुए निकल जाऊं, 400 रुपए ले लूं। आपको मैंने वो घूम रहा है और आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े कि उसको सद्बुद्धि आ जाए, साल भर से दिए नहीं, 4000 रुपए मेरे फंसे हैं महाराज, ईश्वर मेरे 400 रुपए दिलवा देना, तो ठीक है मैं इधर से निकल जाता हूं, मैं कल आपको जरूर 5 रुपए का भोग लगा दूंगा। अब 4000 रुपए लेने के लिए 5 रुपए का तो आप सोचा इसमें नुकसान है, फंसे हुए रुपए तो हैं, और 5 रुपए अगर देने से ही काम निकल जाता हो तो हमें क्या तकलीफ है। अब आप खुद सोच लीजिए कि मंदिर में जाने की प्रक्रिया आपकी क्या है। मैं आप में से अधिकतर लोगों की चिंतन की डूबने की प्रक्रिया नहीं है। We are living in India where once Alexander the Great came. Why was he called great? Akbar the Great, Alexander the Great. The rest were called just kings or at the most emperors. Great is used with the name of only 2 or 3 people. Alexander the Great conquered several small and big kingdoms and returned with 2000 elephants laden with gold and silver in loot. He abducted at least 10,000 women and took them away with him. This was because he was a great warrior and a good general, and the other kings could not withstand his attack. This was because he had in him a desire to win, to loot, to become rich. When he was lying on his deathbed, when he realized that death was near, he called his commander and the physician. He asked the physician how much more he would live. The physician replied that his pulse had become weak and that perhaps he would live for another 3-4 hours. Whoever is born has to die one day, said the physician. Alexander said to the commander, I wish to see whatever I have won in my campaigns. Bring it all here. A huge mound of precious stones, diamonds, sapphires was made on one side, and on the other a huge pile of gold coins was laid. 12,000-13,000 women stood around the bed where Alexander lay. He looked at all the wealth he had amassed. It was immense, and its value could not be calculated. He said to his commander, This all is mine. The commander replied, Yes, your highness, all this belongs to you. You have won it by conquering so many kingdoms. And these women, they too belong to you. Alexander said, After my death, what shall I gain from them? After death, your highness, nothing is left. Your body shall be tied on a bed made of bamboos, and it shall be taken to the cremation grounds, where your body shall be cremated. Then what shall happen to all this? Your highness, all this shall remain behind. No one can take wealth away with oneself. Then do one thing and consider it my final wish. Before death, people prepare their wills and leave their wealth for their sons and grandsons. I don't want any will, just do as I say. Your Highness, please command us.
Whatever you order shall be obeyed. You are great, and in the whole world, this word has been used only with your name. How do they tie a dead body? Asked Alexander. The commander replied, Your Highness, it is a very simple process. The body is laid straight on a bed of bamboos. Then a white sheet is covered onto the body, and then it is set on a pyre and cremated. Alexander said, When you tie my body, let the hands remain hanging on both sides of the body. Cover the body with a cloth, but let my hands remain uncovered, hanging on the sides. But Your Highness, such a thing has never happened before. The hands are placed along the sides, and then the whole body is covered with a cloth. This is completely a new way which you are suggesting. How can we do this? Alexander said, Do as I say. This is my command and my wish that my hands should remain hanging. Your Highness, there must be some reason that you wish your hands to be left hanging. At this, Alexander replied, I want my hands to remain thus so that all people and the coming generations can know that even Alexander the Great went from this world empty-handed. When Alexander the Great left this world empty-handed, then you too shall surely live the same way. When he could not take away anything, even you cannot take away anything. And if this is so, then all these amenities are false and useless. Then what do we have which we can take with us? How can we take away anything? Neither the wife, nor the children, neither the brothers, nor the friends, none shall accompany us. Then who shall be with us? When we have to depart all alone, then why and for what should we clamor so much? Then why is there so much confusion and struggle? Why should we have to earn so much money? If your son turns out to be capable, he will earn and make a living, and if he turns out to be incompetent, then you may leave enormous wealth, he will waste it all away. What can you do? If you have an unfit son, he will spend even 5 lakh rupees in just 7 days, and then he will have no money. And if you have a good son, he won't need your money and will himself earn more than 5 lakh rupees. On reading the history of Greece, one comes to know that Alexander had said, I have achieved everything in my life except for true joy. Instead of all this, if I had been able to devote myself towards God, then I could have achieved true happiness, which a common man cannot achieve easily. If I had attained the totality of life, which is not possible for a common man, then I would have died with joy and happiness on my face. A smile would have been on my face, but today there are only tears in my eyes. Today I feel sorry to have acquired these useless stones and for not having accomplished what I should have. Alexander died, but he left a valuable thought inscribed in the pages of history that we should strive to achieve the totality of life. One cannot achieve it by singing hymns, by visiting a temple, by folding hands, or by closing our eyes. All this is nothing but hypocrisy and deceiving ourselves. You go to a temple and all the while you keep thinking that you have to recover 4,000 rupees from some person. You stand in front of the idol of God and pray, O God, please bestow that person with good sense. He has not returned the 4,000 rupees I loaned him 1 year ago. O God,
Please make him return my money. I will surely come again tomorrow and offer 5 rupees in your feet. You think that to get back 4,000 rupees, you have to offer only 5 rupees. So what is the loss? Just think, is this the mentality with which you visit a temple? I am talking about the sort of mentality possessed by most of the people. This is not the way to fuse with the divine. Guru Purna Chintyai Sadaiva Kriyayat Sasukhodbhava Dukkha Sadaiva Chintyam. Guru Purna Chintyai Sadaiva Kriyayat Sasukhodbhava Dukkha Sadaiva Chintyam. जो श्लोक में बताया गया है कि हमें एक मामूली मनुष्य से पूर्णता तक पहुंचना है, उस पूर्णता की परिभाषा क्या है, और यदि हम पूर्णता की परिभाषा ज्ञात नहीं है तो पूर्णता तक पहुंच नहीं सकेंगे। यदि हमें यह ज्ञात नहीं है कि कर्नाटक प्लेस पहुंचना है, अगर लक्ष्मी मालूम नहीं है तो हम कर्नाटक प्लेस नहीं पहुंच के करोड़ बाग पहुंच जाएंगे। जाना तो कर्नाटक प्लेस, और कर्नाटक प्लेस का रास्ता मालूम नहीं है, और साधुओं ने योगियों ने आपको कहा कर्नाटक प्लेस जाना चाहिए बच्चे, वही शांति मिलेगी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से कर्नाटक प्लेस पहुंचे, और किस तरीके से। जब आपको तरीका ज्ञात नहीं होगा तो जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, कर्नाटक प्लेस नहीं पहुंच सकते, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, और प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते तो प्रभु में विलीन भी नहीं हो सकते, और प्रभु में विलीन नहीं हो सकते तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों में कहा गया कि ईशावास्योपनिषद में कहा गया कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णतम उच्यते। हम पूर्ण हैं और पूर्णता में विलीन होने पर ही पूर्ण हो सकते हैं। हम तो प्रभु ने हमें पूर्ण बनाई, 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, कोई कमी तो रखी नहीं, प्रभु ने कोई कमी नहीं रखी। मगर यह पूर्णता, उस पूर्णता में पहुंचेगी तो पूर्णता प्राप्त होगी। ये एक अधूरी पूर्णता है। केवल मेरे प्रवचन से सुनकर के आप पूर्णता में नहीं पहुंच सकते, उसको जब आप प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारेंगे तो पूर्णता पहुंच सकेगी, पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तब उस प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकेंगे जिनको शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण कहा गया है, राम कहा गया है, बुद्ध कहा गया है, महावीर कहा गया है, जो कुछ भी उनके नाम रखे गए हैं। जब हम उनसे पूरे आत्मसात कर सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं, उनमें बिल्कुल विलीन हो सकते हैं, उनमें अपने आप को निमग्न कर सकते हैं, और जब निमग्न कर सकते हैं तो उसमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर जीवन में बुढ़ापा अपने आप में कोई व्याप्त नहीं होता है, बुढ़ापा कोई तकलीफ नहीं दे सकता, फिर जीवन में अभाव को तकलीफ नहीं दे सकते, फिर जीवन में कोई समस्याएं तकलीफ नहीं दे सकती। क्योंकि जैसा कि मैंने इस श्लोक में बताया कि धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये पूर्णता नहीं है। अगर ये सब पूर्णता होती तो बिरला जी तो पूर्ण हो चुके, फिर तुम्हें कोई कमी है ही, और हमसे फिर ज्यादा सुखी होंगे। यदि पैसा ही सब कुछ दे सकता है तो बिरला जी के जीवन में कोई कमी है ही। मेरे कहने का तात्पर्य था कि ये भौतिक सुख हमें जीवन में पूर्णता नहीं दे सकते, ये केवल संतोष दे सकते हैं। ये संतोष की पिछले साल मेरे पास 4 लाख रुपए थे, अब 4.5 हो गए। बस 50,000 तुमने बेईमानी से, छल से, झूठ से, कपट से, जैसे भी कमाए, 1 लाख रुपया कमाया, और कमाने के बाद में अब आप 8-9 कपड़े तो पहन के आए, 4-5 कपड़े ही पहने। अब 5 लाख रुपए हो गए तो फिर 10-12 कपड़े पहनने चाहिए थे आपको, क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा बढ़ गए इस साल। और फिर पहले 5 रोटी खाते थे, 15-20 रोटी खानी चाहिए आपको। रोटी 4 ही खाएंगे आप, और कपड़े 4 ही पहनेंगे, चाहे 20 लाख रुपए होंगे चाहे 50 लाख रुपए होंगे। फिर हम उस आपाधापी में, उस भागदौड़ में, उस छल कपट में जहां गुजरते हैं, उसके माध्यम से हमें मिलता क्या है? मिलता तनाव और परेशानियां और बाधाएं, अड़चनें मिलती हैं, मगर उसके माध्यम से जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती। गुरु पूर्ण चिंत्यई सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। गुरु पूर्ण चिंत्यई सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्. As I have said in the shloka, that wealth, prosperity, respect, fame and dignity do not constitute the totality of life. If these things meant totality of life, then Birla, India's topmost industrialist, must have achieved it. He must not be facing any problems. He must be happier than us. For if money is everything, then Birla must have no deficiency in life. I had returned from Mauritius
some 15-20 days back, where some yagna for world peace had been performed. Before going to Mauritius, I had met Mr. Birla at his place. I blessed him and asked him if he was fine. He said, "Everything else is fine, but I am facing some financial crisis. Please do something about it, Guruji. Rest is okay." Now, when Birla can be in a financial crisis, then we are always bound to face such problems. Nevertheless, I said to him, "Don't worry, everything will be fine. Other than this, I hope there is no problem." He said, "Well, Guruji, what should I tell you? Actually, I am not able to sleep properly." I said to him, "Well, if you are not able to sleep, spend 2-3 lakh rupees and go and buy sleep from the market." He said, "Guruji, how can sleep be bought?" I said, "When you cannot buy sleep, then of what use is all your money? Of what use is your wealth?" He spends hours lying in the bed without a wink of sleep. At last, he has to take 2 or 3 sleeping pills, and only then does he go to sleep. We are more happy and contented than him. This is because we are able to pass away into deep sleep promptly at 8 o'clock. No amount of money can buy sleep. Money cannot satisfy hunger. Money cannot buy a healthy life, joy, or happiness. A beautiful body cannot be bought with money, and God cannot be bought with it. If you are beautiful and have applied cosmetics and perfumes, this does not mean that you will be able to see God. All these things are in fact useless. Then is there anything through which true joy can be obtained? Believe me, if there is some such thing, it cannot be one of these. For if Birla is in a financial crisis, if he has to spend sleepless nights, then we are better off, as we can at least sleep peacefully, for we do not have so many problems. He always says that he wishes to achieve the realization of God. I asked him, "What do you do for achieving the darshan of God?" He said, "I have had a temple built in my house. I do have a tight schedule throughout the day, but still I do manage to visit it, Guruji." He manages to visit it, and we come and sit here daily in search of true joy. Just think how much difference there is. We come and sit here on our own wish, while he visits it as an obligation. I don't want to criticize him, but I want to emphasize that worldly pleasures cannot grant totality to our lives. They can only offer comforts. You may feel contented that last year you had 4 lakh rupees and today you have 4.5 lakhs. Somehow, by hook or by crook, you have earned 50,000 rupees and then another 50,000. You have till now worn 4 clothes, and now that you have 5 lakh rupees, you should wear 10-12 clothes, for you are now richer by 1 lakh rupees. Earlier, you used to eat 4 slices of bread. Now you should eat at least 10-15 slices. But no, you will always eat 4 bread pieces and wear only 4 clothes, even if you earn 20 lakhs or 50 lakhs. Then, what do we achieve from all the troubles we take and all the deceit and dishonesty we resort to in order to acquire wealth? We only get tensions, problems, and anxieties in return. We do not achieve totality through this medium.